Good morning, students. Today in this lecture, with the continuation of the module 3, that is related with the labor overheads, and with the continuation of topic, that is the wages payment system. Today here we are going to discuss with the bonus system. The bonus to be paid to the worker is computed on the basis of what? That is the saving in the hours. कितना उसने time save किया है. The time saving का formula क्या है? The difference between the time allowed and time taken. For example, 8 hours के लिए उनको time दिया गया और किसी worker ने 7 hours में production complete किया. तो 1 hour जो उसने save किया, that is the bonus for eligible for the bonus payment. The individual bonus scheme commonly used are as follows. Means different author has given their theory on for the bonus plan. So here is the Halsey premium plan, Halsey-Weyr premium plan, Rowan plan, then the Bath variable sharing plan. So let us discuss one by one. First is the Halsey premium plan. Under Halsey premium plan, bonus is paid equal to wages of 50% of time saved. As we have discussed previous one example that अगर वर्कर को 8 hours काम करने के लिए बोला गया और उसने 7 hours में काम कंप्लीट किया तो 1 घंटा उसने सेव किया तो बोनस कितना मिलेगा? 1 घंटे का आधा, दैट इज हाफ एन आवर्स उसको बोनस मिलेगा अंडर द हेल्थ प्रीमियम प्लान पे. सो द टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर दिस प्लान इज वेजेस, मीन्स एक्चुअली उसको वेजेस जो है वो मिलेंगे प्लस बोनस 50% of time saved, that is the half an hour plus the rate per hour. So the formula basis H into R plus 50% S minus H into R, where H hours worked, कितना hours उसने काम किया, then R rate per hour, S standard time. So hours worked into rate per hour plus 50%, then standard time minus actual hours worked into rate per hour. Now the next under the Halsey-Weyr plan, that is the same, but here is the little bit changes in the percentage of the bonus. Bonus is paid equal to the wages of 33.333 of the time saved, means 33 1/3 कि 50% के बदले क्या यूज करना है, that is the formula में 33.1/3% of the time saved. So the earning equals to H into R plus 33 1/3 percentage S minus H into R. H already हम लोगों ने डिस्कस किया, that is the hours worked, then R rate per hour, S that is the standard time, H hours worked, R that is the rate per hour. So let us discuss here one example that is based on the above formula. Time allowed for a job is 48 hours. A worker takes 40 hours to complete the job. Time rate per hour is ₹15. Compute the total earning of the worker. So the total earning as per first the Halsey premium plan, ये formula पे करना है, that is H into R, means worker ने कितने hours काम किया, 40 hours काम किया, ₹15 पर आवर मिल रहा है तो 40 इंटू 15 प्लस 50% यहाँ पे बोनस दे रहे हैं S माइनस H. कितने आवर्स उसको काम करना, दैट इज द 48 आवर्स एक्चुअली काम करना था लेकिन 40 आवर्स में कंप्लीट कर दिया तो टोटल कितने आवर्स सेव किए, 8 आवर्स. सो 50% ऑफ दैट इज द 8 आवर्स, 4 into the 15. So amount is the 660. And here under the second method, that is here 33.13. Then H into R, that is the 40 into 15 plus 33.33, that is the 1/3 का कितना रहेगा, 0.33 into same, that is the S minus H, 48 minus 40 into the 15. So here is the 640. Means under the simple Halsey premium plan पे worker का earning रहेगा 660 and the second Halsey-Weyr plan पे रहेगा 640. Now the next here is the Rowan plan.
Now the bonus hours are calculated as the proportion of time taken which the time saved bear to the time allowed and they are paid for the time rate. So यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बेसिस पे उसको अच्छी तरह समझेंगे. यहाँ पे टोटल अर्निंग इक्वल्स टू वेजेस, सिंपल जो वर्कर ने काम किया उनका वेजेस मिलेगा, बोनस प्लस बोनस. बोनस कैसे निकालना है? टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड. यहाँ पे ये फॉर्मूला अच्छी तरह समझना है. टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड. ऐसा हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि एक वर्कर को अगर 8 आवर्स काम दिया जाता है तो वो 7 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो कितना टाइम सेव हुआ उसका? दैट इज द 1 आवर टाइम सेव हुआ. कितना टाइम लिया था उसने? 7 आवर्स का, डिवाइडेड बाय 8 आवर्स. ये जो हम लोगों ने प्रीवियसली एग्जाम्पल डिस्कस किया था, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर. सो द फॉर्मूला टोटल अर्निंग इक्वल्स टू H into R plus that is the S minus H divided by the S. Clear? यहाँ पे S से divide करेंगे into H into the R, that is the rate per hour. So here is the example. Same example यहाँ पे repeat किया है. That is the time allowed for a job is 48 hours. A worker take place 40 hours to complete the जॉब. क्लियर? 48 आवर्स कंप्लीट करने के लिए बोला है, पर वर्कर ने कितना लिया? 40 आवर्स में प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया. टाइम रेट पर आवर इज ₹15 कंप्लीट कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर. क्लियर? सो अंडर रो 1 प्लान द वर्कर का अर्निंग कितना होगा? फर्स्ट H इंटू आर मीन्स 40 इंटू द 15 प्लस दैट इज S माइनस H, 48 minus 40 into H means 40, then divided by S, that is the 48, then multiplied by R, that is the 15. So here answer is the 700. Clear? Now next to last method था, that is the bath variable share earning. उनका direct formula दिया है. Total earning equals to R, then square root S into H. Clear? S into H. So here the formula is that is the R, rate per hour, that is the 15, then 48 into the 40 equals to what? That is the 657.26. So here the both methods are all the methods are the completed. Now discuss the next topic, that is related with the labor overheads. So here the next topic is labor cost statement. So here is the format of the labor cost statement. Now the statement showing the labor cost per hour per unit पे बनाया जाता है. per hour calculate करने के लिए यहाँ per unit आप लोगों को एग्जाम में लेगा. Particulars and amount. Here is the first that is the normal wages, जो normal wages दिया जाता है. Then dearness allowances, then bonus and any other allowances payable in cash, means different perquisites. For example, house rate allowances, city compensatory allowances. And the next is employer's contribution to PF, because this is benefit for the worker, that is the employer contribution, न कि employee का खुद का contribution. Employer's contribution to the provident fund, then employer's contribution to the employee state insurance, then leave salary, that is based on the normal wages plus DA. जो यहाँ पे normal wages और DA है उसके basis पे leave salary को calculate करना है. And the next one is the expenditure on benefit and amenities. So total labor cost mean इन सब का total करना है, that is the normal wages, dearness allowances, bonus या any other allowances payable in cash, that is the house rent allowances, city compensatory allowances, and another one is that is the employer's contribution to the PF, then employer's contribution to the employee state insurance scheme, then leave salary which is calculated on the basis of normal wages plus DA, then expenditure on benefits or the amenities. इन सब का total करेंगे तो that we work out that the total labor cost यहाँ पे workout हो जाएगा. Then अभी हम लोगों को labor cost per hour और per unit calculate करना है. So we need that the working hours
दैट इज द टोटल आउटपुट, यहाँ पे इतना है। तो फर्स्ट लेबर कॉस्ट पर आवर, दैट इज द लेबर कॉस्ट पर आवर निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, वर्किंग आवर्स। सो टोटल कॉस्ट दैट इज, यहाँ पे देखो आई लिखा हुआ है, दैट इज द आई divided by J, that is the working hours, total labor cost divided by the working hours. So we get the information as per labor cost as per the hours, as per hour. Now labor cost per unit of output equals to the total cost, total labor cost divided by the total output. So here is the information, that is the labor cost per unit. So let us discuss one problem based on the labor cost statement. So here is the one illustration that is based on the labor cost statement. From the following data, prepare a statement showing the cost per day of 8 hours of engaging a particular type of labor. 8 hours means हम लोगों को per hour पे calculate करना है. Monthly salary are the basic plus DNS allowances rupees 200. Leave salary payable to the worker 5% of salary, as we have discussed previously. हम लोगों ने प्रोफॉर्मा में डिस्कस किया था लीव सैलरी किसके बेसिस पे वर्कआउट की जाती है, दैट इज बेसिक प्लस जीएनएस अलाउंसेस। यो यहाँ पे भी सिमिलरली सेम है, दैट इज द लीव सैलरी पेएबल टू द वर्कमैन 5% of the salary. Then employers contribution to PF, that is the 8% of salary, means दोनों का ऐड करना है, item 1 and 2, that is the monthly salary plus the leave salary को total करके on that basis we have to work out the PF, that is the 8% of the salary. Then employers contribution to the state insurance, that is 2.5, that is 2.5 of salary, that is item 1 and 2, this one monthly salary plus leave salary. Then expenditure on amenities, that is the rupees 17.95 per head per month. Then number of working hours in a month, 200. Clear? So let us see the solution. Statement of the cost per day of 8 hours. Particular, that is the monthly salary 200, leave salary monthly salary already दिया है. Then leave salary 5% of the 200 का 5% निकालना है 10. Then employers contribution to PF 8% of 210, दोनों को ऐड करना है, item 1 and item 2. तो 8% of 210 is the 16.80. Then employers contribution to state insurance, that is 2.5 of the 210, that is the 5.25. So expenditure on amenities, that is a 17.95. Clear? Now the total labor cost equals to the 250. So the per hour कितना रहेगा, देखो 200 hours दिए हैं. So the cost per day of 8 hours, एक दिन में 8 घंटे का टाइमिंग रहता है, तो 250 डिवाइडेड बाय 25 कैसे आएगा, 25 डेज को हम लोगों को पर डे कैलकुलेट करना है. सो 200 आवर्स डिवाइडेड बाय 200 आवर्स इन अ मंथ, और डेली कितने आवर्स रहते हैं, 8 आवर्स. सो डेली टोटल मंथ में कितना डेज वर्कर ने काम किया, दैट इज द 25. 250 divided by 25, that is the 10 per day. Clear? That is the labor cost per day is rupees 10.